Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, today I am going to start exercise 5A, of which I have already done question number 1, question number 2. This exercise 5A is based on the laws of exponents which I have already explained to you, and I have got the queries also and I have resolved those queries too. So students, in this exercise now I am going to solve those questions. So we were on question number 3. So question number 3 is express each of the following as a rational number. So a base is given to you, a power is also there. What you have to do? You have to convert this base and power into rational number. 2 to the power of 5. You all know that as per the law of exponent, a upon b to the power of n is equals to a to the power of n upon b to the power of n. यानी कि जो बेस की पावर होती है वो न्यूमरेटर की भी होगी, वो डिनोमिनेटर की भी होगी, राइट. सो इन द सेम वे 2 upon 3 to the power of 5 means 2 to the power of 5 and 3 to the power of 5. 2 की भी पावर 5 होगी, 3 की भी पावर 5 होगी. Now 2 to the power of 5 means what we have to do? We have to multiply 2 how many times? 5 times. We have to multiply 3 how many times? 5 times. So once you will multiply 2 5 times, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, right? ये आपका ब्रैकेट में आएगा. Now 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243. So this is the answer of option number 1, right? So in the same way there are total 8 options. So I am going to solve from option number 5, 6, 7 and then option number 8. Option number 2, option number 3, both are your homeworks. ठीक है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपको होमवर्क कॉपी में करना होगा. सो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑप्शन नंबर 5. फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो योर होमवर्क. फोर्थ ऑप्शन भी आप खुद से करेंगे. सो लेट्स कम टू ऑप्शन नंबर 5. So option number 5 is minus 1 upon 2 to the power of 5, right? So minus 1 upon 2 to the power of 5 means minus 1 to the power of 5, 2 to the power of 5. That means minus 1 will also be multiplied how many times? 5 times, and 2 will also be multiplied how many times? 5 times. Now we all know that if negative sign is even, मतलब नेगेटिव साइन को जब आप काउंट करते हैं तो वो काउंट अगर आपका इवन आता है देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव. वंस यू काउंट द नेगेटिव साइन एंड जो आपका काउंट आता है आफ्टर काउंटिंग देम, इफ इट इज ऑड देन द रिजल्ट इज नेगेटिव. ओके, तब आपका रिजल्ट नेगेटिव साइन, रिजल्ट में नेगेटिव साइन आता है. सो as 5 is a odd number, so once you will multiply minus 1 5 times, the answer will be minus 1. 5 बार अगर आप minus 1 को multiply करेंगे तो आंसर minus 1 ही आएगा. अगर आप 4 times करते तो plus 1 आता, अगर आप 6 times करते तो भी plus 1 आता, अगर आप 2 times करते तो भी plus 1 आता. So once you will multiply any number, if the negative sign is odd number of times, the result will be negative. Now coming to this option 2, once you will multiply 2 5 times, let me write like this. Once you are going to multiply 2 how many times? 5 times. The answer is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So the answer is minus 1 upon 32. Now coming to the next option, that is option number 6. So option number 6 is minus 3 upon 2 to the power of 4. Minus 3 upon 2 to the power of 4. Now here as you all can see that this is negative but the power is even number. So the count of negative sign is even. So the result will be positive. Result कैसा होगा? The result will be positive. So minus 3 multiplied by minus 3, minus 3 multiplied by minus 3, how many times? 4 times. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So we have to multiply both the numerator and the denominator 4 times. Okay. So 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. Minus minus plus, minus minus plus. तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. कमिंग टू दिस वन, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16.
So 81 upon 16 is the answer of option number 6. Now coming to the next option, that is option number 7. So option number 7 is minus 4 upon 7 to the power of 3. Minus 4 upon 7 to the power of 3. So what we have to do? We have to multiply minus 4 how many times? 3 times, right? And we have to multiply 7 also. How many times? 3 times. Since the negative sign, the count of the negative sign is odd number, so the result will also be negative. 4 4s are 16, 16 4s are 64. So minus 64 will be the numerator. 7 7s are 49, 49 7s are 343. 49 7s are 7 9s are 63, 6 carry, 7 4s are 28, 28 plus 6, 34. So 7 7s are 49, 49 7s are 343. So the answer will be minus 64 upon 343. So I hope you must have understood that option also. Now coming to the next option, that is option number 8. So option number 8 is very easy. It is minus 1 to the power of 9. Since 9 is a odd number, 9 is odd, so result will be negative. So the answer is minus 1. जब आप minus 1 को 9 times मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 times में तो पॉजिटिव हो गया, बट जो 9th टाइम मल्टीप्लाई होगा that means minus 1 to the power of 8 multiplied by minus 1. This one is a positive and this one is negative. So plus minus minus. So the answer will be minus 1. Is it clear, students? Now coming to the next question, that is question number 4. So in this question, now let me tell you the classwork and homework. इस क्वेश्चन में आपका जो classwork है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, 6, 7 एंड 8, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर. सो हेयर ऑल्सो इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द टर्म्स आर गिवन टू यू. सो 4 इनवर्स. अब माइनस आपकी जब भी पावर दी होगी, अगर माइनस 1 दी है तो सिंपली यू आर गोइंग टू टेक द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज रेसिप्रोकल, राइट. अगर आपको माइनस 1 पावर दी है, इन स्पाइट ऑफ दिस अगर ऐसे दिया होता आपको 4 टू द पावर ऑफ माइनस 7, तो योर आंसर वुड हैव बीन 1 अपॉन 4 होल 7. आपका आंसर क्या होता? 1 अपॉन 4 होल 7. आपको रेसिप्रोकल लेने के बाद पावर को 7 करना पड़ता है. इफ द पावर इज गिवन इन नेगेटिव, सो वी हैव टू प्रोसीड लाइक दिस. सो सिंस इट वाज ओनली माइनस 1, सो द आंसर इज 1 अपॉन 4. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज माइनस 6. अब एक क्वेश्चन मुझसे शायद श्रीयम ने पूछा था कि मैम लास्ट में माइनस 1 आपका जो है नेगेटिव कैसे हो गया. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ रैशनल नंबर्स, द डिनोमिनेटर्स कैन नेवर बी नेगेटिव. अब आप माइनस 6 का रेसिप्रोकल लिखते हो तो क्या होगा? 1 अपॉन माइनस 6, राइट. बट वी ऑल नो दैट द डिनोमिनेटर कैन नेवर बी नेगेटिव. सो मल्टीप्लाइंग द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय minus 1, so answer will be minus 1 upon 6. I hope it is clear now. Now coming to the third option, that is 1 upon 3 inverse. So the third option is 1 upon 3 inverse, right. So once you will take the reciprocal of this, answer will be 3. 1 upon 3 का reciprocal क्या होगा? 3 होगा, because the reciprocal of 3 is 1 upon 3. Now coming to the fourth option, the fourth option says minus 2 upon 3 inverse. It will be equals to 3 upon minus 2, and since the denominator can never be negative, multiplying the numerator and the denominator by minus 1. So it will be minus 3 upon 2. What will be the answer? Answer will be minus 3 upon 2. So I hope it is clear now. Now coming to the next question, that is question number 5.
So let's begin the question number 5. Find the reciprocal of each of the following. In question number 5, you have to find out the reciprocal for each of the following. So power is given to you, you will simply take the reciprocal. Power is not going to change. Power तो आपकी वही रहेगी, right? So the first option in question number 6 is 3/8 to the power of 4. ये जो पावर होती है वो न्यूमरेटर की भी होती है एंड डिनोमिनेटर की भी होती है. तो वंस यू विल टेक द रेसिप्रोकल, ठीक है, जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी 8/3 to the power of 4, right? So this is how you have to take the reciprocal. Now coming to the next option, that is option number 2, -5/6. The second option is -5/6 to the power of 11, right? So it will be 6/-5, and you all know that the denominator can never be negative multiplying the numerator and the denominator. The bracket was not proper. By -1. So the answer will be -6/5 to the power of 11, right? Now coming to the third option, it is very easy. 6 to the power of 7. So what is the reciprocal of 6? If you know the answer, you can comment down in the comment section, because it's been so many days I am not asking you any questions. So what is the reciprocal of 6? The reciprocal of 6 is 1/6. So the answer will be 1/6 to the power of 7. Now coming to the fourth option, -4 to the power of 3. So what is the reciprocal of -4? If you know the answer, you can pause the video and reply to me in the comment section. The reciprocal of -4 is 1/-4. Now the denominator can never be negative, so it will be -1/4 to the power of 3. What we have done to make the denominator positive, I have multiplied the numerator and the denominator by -1. Now coming to the next question, that is question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इजी ऑल्सो. अभी आपको मैंने एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में लॉ एक्सप्लेन किया था. किसी भी इंटीजर या रैशनल नंबर की पावर अगर 0 है तब वैल्यू बिकम्स 1. 8 टू द पावर ऑफ 0, आपका पहला क्वेश्चन है 8 टू द पावर ऑफ 0. किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होता है, वो 1 होता है. नाउ कमिंग टू सेकेंड वन, -3 टू द पावर ऑफ 0. हियर ऑल्सो द आंसर विल बी 1. Next one is 4 to the power of 0 and 5 to the power of 0. There is addition sign in between. अब 4 to the power of 0 तो 1 होता है, plus 5 to the power of 0 is also 1. So the answer is 2, because 1 plus 1 is 2. Coming to the fourth option, 6 to the power of 0 multiplied by 7 to the power of 0. Since the value of 6 to the power of 0 is 1 and the value of 7 to the power of 0 is also 1, and 1 ones are 1. So what will be the answer? 1. Wasn't it easy, students? Yes. Now coming to the next question, that is question number 7. Simplify each of the following and express each as a rational number. यहाँ पे क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करके इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट? इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें आपको सिंप्लीफाई करना होगा, रिड्यूस करना होगा, तो इट विल टेक सम टाइम. सो लेट मी एक्सप्लेन यू द फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 3/2 multiplied by 3/2 to the power of 4 multiplied by 1/5 to the power of 2. 1/5 to the power of 2. Now what we have to do? We have to check that can we reduce anything? So let's start. 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 1 2 3 4 upon 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 1 का आपका 2 times 5 will be there and 2 times 1 also be there, right? Since both are in multiply, so I have given this sign. Make this as the numerator and the bottom ones as the denominator. Now what we have to do? We have to check that can anything be reduced. So 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 is an odd number.
It cannot be reduced with 2 also, it cannot be reduced with 5 also. So you will simply multiply. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. Now coming to this one, जब भी आपको 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन मिलते हैं तो द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज 5 2s are 10. यहाँ पे आपका 10 आ गया, बाकी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. अगेन यू हैव गॉट 1. 5 2s are 10. तो आपके 2 10 हो गए, बचेगी 2 2. राइट. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 2s are 4, 10 10s are 100, 100 4s are 400. So the answer will be 81 upon 400. I hope you must have understood this question. Now I am going to explain you the next option, that is option number 2. So let's begin, students. So option number 2 is minus 2 upon 3 to the power of 5 multiplied by minus 3 upon 7 to the power of 3. So minus 2 upon 3 to the power of 5 multiplied by minus 3 upon 7. Minus 3 upon 7 to the power of 3. Right? Is this the question? Now what you have to do? It is very simple. आप इसे पहले लिखेंगे in the expanded form. minus 2 upon ये आपका minus 2 भी 5 times लिखा जाएगा, right? And minus 3 is positive. 3 will also be written 5 times. तो 1 2 3 4 5. यहाँ पे आपका 3 कितनी बार लिखा जाएगा? 3 times. And 7 also how many times? 3 times. Now you have to check that anything can be reduced or not. ठीक, तो आप reduce देखेंगे कि कुछ reduce हो सकता है या नहीं reduce हो सकता. So 3 3 यहाँ पे आपका -1 बचेगा because 3 is positive. 3 1s are 3 minus 1s are 3 1s are 3 minus 1 because 3 reduce हो रहा है, minus sign नहीं reduce हो रहा क्योंकि this 3 all the 3 are positive. ये तीनों के तीनों 3 positive हैं तो सिर्फ 3 रिड्यूस होगा, माइनस का साइन रिड्यूस नहीं होगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड वी विल सिंपली मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बिकॉज नाउ नथिंग कैन बी रिड्यूस्ड ओवर हियर. सो लेट मी काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइन. 1 2 3 4 5 6 7 8. So since the number of negative sign is in even, what will be the sign of the result? Result का sign क्या होगा? If you know the answer, please pause the video and reply to me in the comment section. Yes, since the number of negative sign is even in number, so the result will be positive. Now let me multiply. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2s are 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. 32 में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा. So 32 upon, now coming to the denominator. 3 3s are 9. We all know that 7 7s are 49 and 49 7s are 343. So what we have to do? 343 will be multiplied by 9. या तो आप यहाँ से शुरू करिए या तो आप यहाँ से शुरू करिए. We all know that multiplication of integers is commutative. तो डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सही आएगा. फ्रॉम द राइट साइड ऑल्सो इट इज़ करेक्ट, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑल्सो इट इज़ करेक्ट. So 7 7s are 49, 49 7s are 343. Now 343, 3 3s are 9. So let me multiply it for you. 9 3s are 27, 2 carry, 9 4s are 36, 2 carry, 9 3s are 27 plus 3. So it is 3089. What is the answer? 32 upon 3089. I hope you must have understood, students. Now coming to the next option, that is option number 3. Yes students, 3087 मैंने यहाँ 9 लिख दिया. It will be 3087. Right. Now coming to the next option, that is option number 3. Let me rub this. All these questions you have to do in the class work copy. Please, whenever you are doing the maths work, sit along with your class work copy and pen and then watch the video and do the questions along with me. अगर आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी. Right. So the third option is minus 1 upon 2 to the power of 5
multiplied by 2 to the power of 3, 2 to the power of 3 multiplied by 3 upon 4 to the power of 2, right? So let's begin. -1 to the power of 5, आप इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि -1 को जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल बी नेगेटिव, सो देर इज नो नीड टू राइट -1 5 टाइम्स. नाउ कमिंग टू दिस ऑप्शन 2 to the power of 3, write it 3 times, then 3 to the power of 2, write it 2 times. Now 2 to the power of 5, that means 2 will be written how many times? 5 times. 1 2 3 4 5. इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो मेक इट 1. नाउ द नेक्स्ट वन इज 4. सो 4 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करिए बिकॉज 3 upon 4 to the power of 2. Now we have to check that anything can be reduced or not. So 2 ones are 2 ones are 2 ones are 2 ones are. So we have reduced, दो 2 आपके reduce हो गए. Now check whether further anything can be reduced or not. क्या कुछ और reduce हो सकता है? If yes, please reply to me in the comment section with yes. अगर कुछ reduce नहीं हो सकता तो please reply to me in the comment section with no. कुछ reduce नहीं हो सकता बेटा इसमें. So 3 3s are, अब since -1 to the power of 5 तो result negative sign आएगा आपका. So -9, 3 3s are 9, यहाँ पे आपका एक negative था तो -9. Now coming to the denominator, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, and then 8 4s are 32. 32 4s are 4 2s are 8, 4 3s are 12. So 128. So what is the answer, students? The answer is -9 upon 128, right? Now coming to the next option, only 2 options are left. थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए सारे मैं आपको यहीं पे क्लास को कॉपी में ही करवा रही हूँ. ओके, सो लेट्स बिगिन. कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में. इट वॉज 2 to the power of 3, मैंने 2 ही बार लिखा है 2, एक बार और रहेगा आपका और एक 2 आपका और कैंसिल हो जाएगा. तो जब एक 2 और कैंसिल हो जाएगा, नाउ बचा 4 4 से 16, राइट? एक 2 कैंसिल होने के बाद 4 4 से 16, 16 2 से 32, 32 2 जा 64, 32 2 जा 64. सिंस इट वॉज 2 to the power of 3 और मैंने 2 ही बार 2 लिखा था तो 3 2 नीचे से और 3 2 आपके ऊपर से रेड्यूस हो जाएंगे. नाउ कमिंग टू फोर्थ ऑप्शन. लेट्स बिगिन. सो द फोर्थ ऑप्शन इज 2 upon 3 whole square. Whole square means to the power of 2 multiplied by -3 upon 5 cube. Cube means जब किसी भी की पावर 3 होती है तो आप उसे क्यूब बोल सकते हैं, राइट? मल्टीप्लाइड बाय 7 upon 2 स्क्वायर यानी पावर 2, right? Now what we have to do, we have to split them, we have to write them in the expanded form. ये exponential notation में दिए गए हैं तो let them write, let me write and then try to simplify. 2 times, since the negative sign is 3 times, the result will be negative only. Now 7 also 2 times and then 2 also 2 times, राइट? अगर आप यहाँ नीचे मल्टीप्लाई नहीं भी लगाते तो ये जो मल्टीप्लाई आपने लिखा है ये आपका सेंटर में है. आइदर मेक अ सिंगल लाइन, या तो आप एक सिंगल लाइन बना दीजिए या आप तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि जब आप रिड्यूस करते हैं तो 1 फ्रॉम न्यूमरेटर 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड. और ऐसा नहीं है कि यहाँ का यहीं से आपका रिड्यूस होगा, ये वाला इससे भी रिड्यूस हो सकता है, आपका ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से भी रिड्यूस हो सकता है. दिस न्यूमरेटर कैन बी रिड्यूस फ्रॉम दिस डिनोमिनेटर ऑल्सो, दिस न्यूमरेटर कैन बी रिड्यूस फ्रॉम दिस डिनोमिनेटर ऑल्सो, या इससे भी रिड्यूस हो सकता है. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट मी कैंसिल इट. 3 1 जा 3 1 जा, 2 3 कैंसिल होंगे, -1 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 3 था आपका, यहाँ पे -3 नहीं था. नाउ दीज 2 विल ऑल्सो बी कैंसल्ड, सेम आपका कैंसिल हो गया. नाउ एनीथिंग विच इज़ लेफ्ट दैट कैन बी कैंसल्ड.
nothing can be cancelled now. Now 7 7s are 49 and 49 क्योंकि ये आपका 1 1s are 1, there are 3 negative signs. तो 49 में आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट विल बी नेगेटिव ओनली. सो 49 3s are 3 9s are 27, 3 4s are 12 and 13 14. So minus 147. Now 5 5s are 25, 25 5s are 125. So the answer is minus 147 upon 125. I hope you must have understood. जिसको ना समझ में आया होगा तो एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा चेक कर लेंगे. Now coming to the fifth option. Fifth option is थोड़ा सा अलग है. So I want to explain this option also. Because if I will not explain, आपको समझ में नहीं आएगा. It will create a lot of confusion in your mind. So let me explain you the fifth option. So the fifth option is curly bracket, then one more bracket, minus 3 upon 4 to the power of 3 minus 5 upon 2 to the power of 3. Now the bracket closed, multiplied by 4 to the power of 2. Here the situation is little bit complicated because यहाँ पे आपने multiply नहीं किया है. आपको multiply नहीं करना. For what you have to do, पहले आप इसको इसके exponential notation में से change करके expanded form में लिखेंगे, right? And after that you have to take the LCM. आपको उसके बाद LCM लेना होगा and then you have to solve this question. Right, as per the exponential notation I have written it. Now thereafter 4 to the power of 2. Now what you have to do, you have to take the LCM. So what is the LCM of 4 4s are 16, 16 4s are 64, 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो आपका 64 और 8 का LCM क्या होगा? The LCM of 64 and 8 is, जब आपका कोई भी मल्टीपल हो, सिंस 64 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो जो बड़ा नंबर होता है वही उसका LCM होता है. सो द LCM ऑफ 8 and 64 इज 64. तो अब आपका ये तो ऑलरेडी 64 है, 4 4s are 16, 16 4s are 64. नाउ कमिंग टू दिस वन, आपको ये जो डिनोमिनेटर है इसे 64 बनाने के लिए 2 2s are 4, 4 2s are 8. अब 8 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 64 बन जाए? आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. द सेम थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर ऑल्सो, राइट? सो नाउ लेट मी सॉल्व दिस. सो स्टूडेंट्स, let me multiply this. 3 3s are 9, 9 3s are 27. There are 3 negative signs, so the result is negative. Minus 27, denominator तो आपका 64 हो ही गया है, right? Now let me rub this. ये जो स्टेप है मैं ऊपर लिख देती हूँ so that it should be clear to all of you. Okay? So let me write it upwards. 3 3s are 9, 9 3s are 27. So minus 27. Now this minus sign, ये minus sign आपका ऐसे ही रहेगा. Now coming to this portion. So 5 5s are 25, 25 5s are 125. 3 नेगेटिव साइंस यानी कि रिजल्ट का नेगेटिव साइन होगा. Now 125 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000. क्या आएगा? 1000. सिंस देयर वर 3 नेगेटिव साइंस, इसीलिए यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आया है. अपॉन 64 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर ऑफ 2, राइट? Now let me expand this or let me solve this in order to simplify. So minus 27, we all know that minus minus plus. So minus 27 plus 1000 is equals to upon 64 multiplied by 4 to the power of 2. आप इतना पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो 1000 में से 27 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े नंबर का साइन लगेगा. तो जब आप 1000 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, okay, once you will subtract 27 from 1000, what will be the answer? 973. क्या आंसर होगा आपका? 973. So 973 upon 64. 973 upon 64. अब ये वाला जो है इसको आप स्प्लिट कर दीजिए. 4 multiplied by 4. There is no denominator, make it 1. अब आप चेक करिए कुछ रिड्यूस हो सकता है या नहीं.
तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 6 जा 24. Again 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. Now can it be, is it divisible by 4? 973. Please reply to me in the comment section that 973 is divisible by 4 or not. No, 973 is not divisible by 4. So the answer is 973 upon 4. What is the answer? 973 upon 4. So that's all for today, students. I have taken a lot of time of yours. So you have to do these questions in your maths class for copy. अगर आपको ना समझ में आए हो तो you can comment down in the comment section. But yes, try to understand each and every step one by one and साथ में आप खुद भी लिखिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा. So that's all for today. Have a great day ahead. Thank you, students. Subscribe the channel and press the bell icon.